A moment, please. I got something. Adrian. Oh, I'm sorry, I mute myself. I forgot to unmute. So it's fine, everyone, and I also like in my page as well, because I got the link from the president of the international conference. So yeah, in my page. So a lot of people are watching right now. Jenny, you got me right? Watching right now. Hi, Jenny. You got me? Hi. Good to see you. I hear you like very, very loud. Dr. Shubha, fine, everything? Yes, everything fine, sir. We will begin in exactly 2 minutes from now, sir. We'll begin. Yeah, please. And Panga sir has told me that you have another program soon after this. So we will be taking you second in the order, sir. That's why, because I have another program after this session. Panga sir has informed. That's why I asked the president to allow me to come very early. Certainly, sir. Thank you. Sir. Our pleasure, sir. Our pleasure. Thank you. How about the weather in India? It's midway between monsoon and winter. Monsoon is supposed to have got over, but it's still raining and it's still not cold enough. So we're actually going through autumn, mixture of monsoon and autumn. Yes. What about the weather in Cambodia? Well, Cambodia is raining almost every day because it's rainy season, right? There was one poet who was supposed to join us from Vietnam, but it rained so heavily that he lost contact. There was no electricity, so he couldn't. In fact, he attended the entire event, and when it came to his turn, he couldn't connect with us. Yeah, so I see. These things do happen, yes. But nevertheless, it's been a beautiful experience. Yesterday also was a very good participation. Practically every poet turned up. Yes. Vipin sir, welcome to LD Arts. Finally, we could see you on the trial run. There was some problem with your internet connectivity, I guess. Thank you. Yes. Thank you. Good evening, everyone. Good evening. A moment. Bật lại thì bật đủ sao cái này. A moment, please. I got a technical problem. A moment, please. Sure, sir. Thank you. Sorry. A moment, please. I got a technical problem, so maybe we can talk something a little bit. It's a really pleasure to join this program once again. Actually, hopefully we will have many conference. Yes, certainly.
Yeah. We like to hold them in the hybrid mode, so some people can join from abroad and some can join from India. Yeah, That's what we're planning next. Yes. exactly, because we can share a lot of knowledge and experiences as well as the tradition and culture, you know. Very, very good. Hello, Jenny ma'am. Hello. Dennis ma'am. Good evening. Hello. Jenny ma'am, Dennis from IT team. Yes, please tell me, Danish. Can start recording and live streaming right now or wait some So minutes? Sometime let's let the event begin formally and then we can start the recording. Okay. Before the beginning, you just give me a minute. Yeah, for sure. Yeah, thank For you. sure. Yeah. Yeah. Okay. We can start the recording. Okay. Jenny ma'am, with your permission, can we begin? I'm ready now. Everything ready now. Absolutely. Let's begin. Okay. So, Recording in progress. great. Namaskar and welcome. Good evening to all the participants who have joined us. A very, very good evening to everyone from LD Arts. We take this poetic journey, this Kavya Yagya, forward, friends. It has been such a pleasure to have invited poets who are scholars, academicians, and belonging to different spheres of life, but who have been with us since the first day when we began this Kavya Yagya. Yagya in the traditional terms means something which is absolutely holy. It is associated with a lot of holiness. And what can be in the entire calendar year, friends, what can be a more holy period than these 9 days of Navratri? So the Kavya Yagya coincides with Navratri, giving us power, giving us blessings, and giving us every known good quality of humanity. What does poetry do, friends? Poetry joins us, brings us together. Poetry written in America, written in Thailand, written in Brazil, written in Australia, written in India or in the Africa. Poetry हम सबको जोड़ता है. कविता एक ऐसी कड़ी है जो हम सबको एक चेन में जोड़ती है, friends. So celebrating this chain of humanity is what the Kavya Yagya is all about. Navratri ka time hai. It is the third day of Navratri. Third day of Navratri simply means to give up on all the past grudges. Begin on a new journey altogether. नवरात्रि में हमको प्रार्थना से शुरू करना चाहिए. प्रार्थना क्या है, friends? What is prayer ultimately? Prayer is not only going to a temple, mosque, church, or a gurudwara and with folded hands sitting in front of God Almighty. Prayer is to discover the humanistic values within ourselves and to become sensitive and sympathetic towards all human beings of this world. Ultimately, poetry हमको इंसानियत से जोड़ती है, मानवता से जोड़ती है. सबसे बड़ी प्रार्थना जो है वो निदा फाजली साहब के शब्दों में अगर मैं कहूं, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो कुछ यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए. ये प्रार्थना है. This is prayer. John Milton, the great English poet, has also very correctly said, they also serve who only stand and wait. So friends, once again, welcoming everyone, remembering with a lot of respect and honor, two very important people without whose support this even could not have been possible. The director of Ahmedabad Education Society, Shri B.M. Shah sir, and of course the academic advisor of the AES, Shri Kalro sir. Both of their blessings have been phenomenal to us. They have always been with us. And without them, we could not have possibly brought this event together. 47 different poets of 35 different languages coming on a single platform has been possible only thanks to B.M. Shah sir and Kalro sir.
So taking it forward, and of course, how can we ever forget the dynamism of our principal, Dr. Jenny Rathod. It was her idea from conception to completion. Untiringly, she has worked towards bringing all this to us together. So, inviting the first guest for today. As I said that we have 47 poets from 35 different languages. I feel greatly honored, friends, to invite Sri Bhante Haq Shanghai, who writes in Khmer language and in the Pali language. He lives in Battambang, Cambodia, and he has a master's in Buddhist studies. So he is an internationally acclaimed poet. He is going to speak to us about Pali and in Pali and the greatness of that language. And of course, the original verses of the world have come out from that language. Currently, sir, you work as the Executive Director of Buddhism for Education of Cambodia. So, sir, with a lot of respect and honor, I feel it my privilege to invite you at the Kavya Yagya. Please welcome, sir, to LD Arts, and please read out your poetry to us, sir. Thank you, sir. My respect to all most venerable Sangha, and very good evening from Cambodia to all of you, all the speakers and all participants in a very great international poetry festival today. Actually, it's very, very great honor for me to be invited as a speaker to talk about the poem in my language. As just mentioned at the moment, is about Khmer language, and I'm very, very great and honored and proud as well to be one of the 35 languages in this international festival. It's my first time as well, such conference, such festival. That's very great and excited. So, and I also the first one today. It's a very great, the first one. So yeah, before I read in my language, and I have to chant also in the way that we chant in our poem. So I would like to explain a little bit. So I composed this poem. It is called the Wat Pia Prampi is in my language. Wat Pia Prampi. This is about seven words. That is the poem name. 7 words. There is the way that we compose it. One sentence with 4 phrases. One sentence with 4 phrases, and one phrase have 7 words. 7 words. So 4 phrases become 1 sentence. So I composed 6 sentences, and my poem talking about the real youth with great heart for the nation. It is the title of my poem that I will read out in my language. So once again, the title is about the real youth with great heart for the nation. First sentence is I talk about as a youth, but I mentioned here particularly for Cambodian youth, but actually the meaning should be in general, not only Cambodian youth. But yeah, for Cambodian people, Cambodian youth especially, they have to be aware and to try hard to study, to gain knowledge, to develop themselves as human resources. This is the first. And the second, when you got the knowledge, you have to use it in the right way for the nation. So it is useful for all the people around the world. And then, as we have our own nation, then we have our own identity. So
we have to preserve and maintain our identity, tradition, culture, everything that identify ourselves as a Khmer, as Cambodian Hmong, as Cambodian youth, as Indian youth, Indian people. So we have their own identity, culture, tradition. So we have to preserve it. And the last part talking about we should be together for our national interest, for our nation, for our country. So that's all the meaning that I will chant. Firstly, read first, and then I will chant it as a. We say simply say sing, but I'm not really good at singing. Singing, actually, there is the one who is expert and skillful with the chanting, the very nice voice. But for me, I think in my first time that I chanted for the show, because usually I just read my poem, I just read, and I give to someone who is very skillful to chant it. So, but for this special international conference, I will chant myself to see how good I am. So, okay, let's start. Okay, in my language, right? Okay. My language and also Pali mix. Yeah. You will join pet chat smart shit. This is the title. You will join prosray pong tang lai. ត្រូវតែខ្វល់ខ្វាយខំសិក្សាសិល្បៈវិជ្ជាក្បួនតម្រាកសាងរដ្ឋាឲ្យថ្កើងថ្កានយុវជនជាស្នូលប្រទេសជាតិត្រូវតែក្មៃគ្មៀតដោយក្លាហានលើកស្ទួយកិត្តិយសជាតិឲ្យបានសាមគ្គីគ្រប់ប្រានថែរក្សាយុវជនគួរយល់ដឹងឲ្យច្បាស់វប្បធម៌សាសន៍សាស្ត្រជាតិខេមរាប្រពៃណីសាសនាគេដូនតាបវរថ្លៃថ្លាអស្ចារ្យក្រៃយុវជនគួរគិតកិច្ចឲ្យឆ្ងាយអបាយមុខទាំងឡាយនាំចង្រៃបំផ្លាញគ្រប់យ៉ាងរៀងរាល់ថ្ងៃនាំយើងខ្សិនខ្សៃបងជីវិតយុវជនត្រូវមានមនសិការមោះមុតហានខ្លាដោយសុចរិតការពារជាតិសាសន៍ដ៏ពិសិដ្ឋចិត្តស្មោះត្រង់ពិតឥតខ្លែងខ្លាយយុវជនខ្មែរយើងទាំងប្រុសស្រីត្រូវមានស្មារតីរួមចិត្តកាយសាមគ្គីជួយជាតិទាំងចិត្តឆ្ងាយខ្មែរបានសប្បាយសុខសាន្តណាយ That's finish reading and I will chant it in the way that I can so I have to take breath a little bit okay slowly are you ready Dr. Chuba You can talk. Very much, sir. We're looking forward and waiting for you to hear the chanting, sir. Okay, thank you. So I can start the chant, my chant. Okay, be ready, everyone. Oh, a lot of viewer in my page now. Almost 800 watch in my page, Facebook page. So Buddhism for Education of Cambodia, you can go to that page and click like. You will see every of you here in my page as well. So have a great smile, okay? Big smile. Okay, well, យុវជនប្រុសស្រីផងទាំងឡាយត្រូវតែខ្វល់ខ្វាយខំសិក្សាសិល្បៈវិជ្ជាក្បួនតម្រាកសាងរដ្ឋាឲ្យថ្កើងថ្កានយុវជនជាស្នូលប្រទេសជាតិត្រូវតែក្មៃគ្មៀតដោយក្លាហានលើកស្ទួយកិត្តិយសជាតិឲ្យបានសាមគ្គីគ្រប់ប្រានថែរក្សាយុវជនគួរយល់ដឹងឲ្យច្បាស់វប្បធម៌សាសន៍សាស្ត្រជាតិខេមរាប្រពៃណីសាសនាគេដូនតា
បវរថ្លៃថ្លាអង្គចាក្រៃយុវជនគួរគិតកិច្ចឲ្យឆ្ងាយអបាយមុខទាំងឡាយនាំចង្រៃបំផ្លាញគ្រប់យ៉ាងរៀងរាល់ថ្ងៃនាំយើងសិនខ្សៃបងជីវិតយុវជនត្រូវមានមនសិការមោះមុតហានខ្លាដោយសុចរិតការពារជាតិសាសន៍ដ៏ពិសិដ្ឋចិត្តស្មោះត្រង់ពិតឥតខ្លែងខ្លាយយុវជនខ្មែរយើងទាំងប្រុសស្រីត្រូវមានស្មារតីរួមចិនកាយសាមគ្គីជួយជាតិទាំងចិនឆ្ងាយខ្មែរបានសប្បាយសុខសាន្តណាយខ្មែរបានសប្បាយសុខសាន្តណាយ finish thank you finish Thank you very much, sir. It was a very different experience. It's a very unique experience. I have never been able to forget in my life Dalai Lama saying Yeah. this, that if you want others to be happy, practice compassion. Right, If you want to be exactly. happy, practice compassion. So what Exactly. you taught us through your poetry, sir, you simply taught us compassion. Thank You you. taught the youth today, unfortunately, all over the world is beginning to forget compassion. But Right. this is one quality that you tried to chant, sing, and explain the meaning to us so beautifully well. We are honored, as I said earlier also, sir, we are honored to have had you today as a poet from Cambodia. Thank you very much, sir. Thank you so much. Sir. Thank you. So yeah, final word for me. So I would like to thank you, the organizer and the Gujarat, right? Gujarat University for Yes. inviting me to be a speaker and to be part of this international conference. Is really great honor for me to get to know all of you and to share my experience, and as well as to share the way that I chant. As I mentioned earlier, my first time to chant. So yeah, very excited. Great. And okay, so wish you all happy, good health, and be away from the COVID-19. In Cambodia is outbreak, and we got serious as well, but we got almost people got vaccination, so hopefully it will be fine. But we all face all those problems, I mean, around the world as well. And a few months ago in India, so serious, so we also give compassion and really want to share with the people of India. So now I think we come step by step to overcome all those problems. And so with that great compassion, we wish all of people to be a way to dissolve all those problems, and COVID-19 please come out from the earth, from the human world. So thank you very much, everyone, and we'll see you next time. Thank you. Thank you. Taking the Poetry Festival forward, Kavya Yagya ko aage badhate hue, I take tremendous pleasure and happiness. I share a lot of happiness when I say this. The second poet is one of the youngest poets that we have. And Mahadev Satu Gaonkar, आप आ चुके हैं सर रूम में, आप ज्वाइन हो चुके हैं. मैं आपसे विनती करती हूँ महादेव गांवकर जी से कि आप प्लीज अपना वीडियो ऑन करें और हम सबके साथ जुड़ जाएं सर. He is a very young and accomplished poet.
एंड सबसे अच्छी बात इनकी बहुत ही बेहतरीन बात ये है कि महादेव गांवकर सर रहते हैं, he lives in Goa, and all of us we know Yes. that when we get sick of Goa, welcome Mahadev Gaonkar sir, welcome. जब हम लोग शहरों से और नमस्ते सर, वेलकम। हम लोग जब सर आप इतने बढ़िया एक प्रदेश में रहते हैं, हम यहाँ की भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से जब थक जाते हैं तो इमीडिएटली वी रन टू गोवा, एंड फॉर अस गोवा ओनली मीन्स बीचेस and lot of cafes, but Goa also has a very unique language, and that is the Konkani language. मैं आपका YouTube पे एक कोंकणी भाषा में आपका एक पोइट्री रेसिटेशन देख रही थी, सुन रही थी, मुझे बहुत समझ में तो नहीं आया, लेकिन जो कमेंट्स थे YouTube पे, उसमें एक कमेंट में एक जेंटलमैन ने बहुत क्लियरली लिखा था that you are one of the finest poets of Goa. So हमें बहुत खुशी है सर कि ऐसे फाइनेस्ट पोएट ऑफ गोवा कोंकणी भाषा में, और आप केवल कोंकणी में नहीं, आप हिंदी मराठी में भी लिखते हैं। सो हमारे लिए ये एक बहुत गर्व की बात है कि इतना हिंदुस्तान में जो टैलेंट है यंग लोगों में, अब सर ने जो बात कही, भंते हक सिंगाई सर ने जो बात करी, यूथ के बारे में बात करी, he talked about the youth, and we are very happy, privileged and honored to invite a very youthful face in the काव्य यज्ञ। तो मैं आपको वेलकम करती हूँ LD आर्ट्स की तरफ से, महादेव गांवकर सर, and the platform is yours. Please go ahead with your poetry recitation in the Konkani language, sir. Welcome, sir. नमस्कार सबको और नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं गोवा का रहने वाला हूँ, सत्तरी से। इस इंटरनेशनल काव्य यज्ञ में मुझे अपनी कविता सादर करने के लिए जो मौका दिया गया है, उसके लिए आयोजक जो है उनको धन्यवाद। और मैं जो मेरी पहली कविता सुनाने जा रहा हूँ, वो उसका नाम है फ्लैटात रावपी कवि। कोंकणी में है फ्लैटात रावपी कवि, यानी जो फ्लैट में शहर में रहते हैं कवि वो, और जो गांव में है वो गांव का विषय लेकर लिखते हैं, पर गांव देखते नहीं है, सिर्फ उनके मन में जो आते हैं ख्याल वही लिखते हैं। उसी के विषय में एक मेरी कविता है, फ्लैटात रावपी कवि। फ्लॅटात रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयता, फ्लॅटात रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयता, पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झडयता, पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झडयता, फ्लॅटात रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयता। मिरगाचो पयलो पावस आंगार अजून घेवंक ना, उदकांतले खेळ करून कोणीच केन्ना पिवंक ना। मिरगाचो पयलो पावस आंगार अजून घेवंक ना, उदकांतले खेळ करून कोणीच केन्ना पिवंक ना। शावराचें उदक न्हावन पावसाचो आनंद मेळयता, शावराचें उदक न्हावन पावसाचो आनंद मेळयता, फ्लॅटात रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयता, पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झडयता। बैलाच्या खानार जू धरून शेतांत जोत धरूंक ना, आडासतास मारून केन्ना कुणगे चार पेरूंक ना। बैलाच्या खानार जू धरून शेतांत जोत धरूंक ना, आडासतास मारून केन्ना कुणगे चार पेरूंक ना। मनांतली बियां फापडून गुठो वयर भोंवयता, मनांतली बियां फापडून गुठो वयर भोंवयता, फ्लॅटांत रावपी कवी हांव विचारांनी कवना फुलयता, पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झडयता। शेळकाटेन काडलेले कुल्लेचे देंगे अजून पेचूक ना, हातीन निमसो दिवो घेवन दिपकोत केन्ना वचूक ना। शेळकाटेन काडलेले कुल्ल्यांचे देंगे अजून पेचूक ना, हातीन निमसो दिवो घेवन दिपकोत केन्ना वचूक ना। खंयच्याय वेळार हुवार हाडून चोडवणेचें नुस्तें चडयता, खंयच्याय वेळार हुवार हाडून चोडवणेचें नुस्तें चडयता, फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयता, पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झडयता। गरयेक गायणो लावन न्हंयचेर केन्ना गरोवंक ना, शेतांत कोंगे कशे आसता तेवूय अजून पळोवंक ना।
घरी एक गायनो लावन न्हंयचेर केन्ना गरोवंक ना, शेतात कोंगे कशे असतात तेवूय अजून पळोवंक ना, गायरेंतले बेबे व्हरून शारांनी तांकां रडयता. गायरेंतले बेबे व्हरून शारांनी तांकां रडयता. फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयता. पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झडयता. रानात वचून रोयणीची अळमी अजून काडूंक ना, पावसात मेळपी तेरेताय किळस स्वता केन्ना हाडूंक ना. रानात वचून रोयणीची अळमी अजून काडूंक ना, पावसात मेळपी तेरेताय किळस स्वता केन्ना हाडूंक ना. आकांताचें वारें हाडून झाडां पेडां धुलयता. आकांताचें वारें हाडून झाडां पेडां धुलयता. फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयता. पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झडयता. कागदाची व्हडी करून उदकांत अजून सोडूंक ना, पिसारो फुलयल्लो मोर नदरेक केन्ना पडूंक ना. कागदाची व्हडी करून उदकांत अजून सोडूंक ना, पिसारो फुलयल्लो मोर नदरेक केन्ना पडूंक ना. तोंडांतलें उदक फुस्स करून इंद्रधनुस कसो उबयता. तोंडांतलें उदक फुस्स करून इंद्रधनुस कसो उबयता. फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयता. पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झडयता. गांवची जीण जगपाचें भाग्य नशिबात म्हज्या येवंक ना. गांव सैम हाचेर बरयत ना, कांयच कमी पडूंक दिवंक ना. गांवची जीण जगपाचें भाग्य नशिबात म्हज्या येवंक ना. गांव सैमाचेर बरयत ना, कांयच कमी पडूंक दिवंक ना. शारांत रावून बेस बरो कवितेंत गांव चित्रायता. शारांत रावून बेस बरो कवितेंत गांव चित्रायता. फ्लॅटांत रावपी कवी हांव सैम काव्य रचयता. पागोळेचें उदक पळोवन घोग्यांनी पावस झडयता. फ्लॅटांत रावपी कवी हांव विचारांनी कवना फुलयता. ये जो मेरी कविता है, ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आएगी, ऐसा ही लगता है. दूसरी मेरी कविता है दफ्तराचे वजह. यानी जो स्कूल के बच्चों का जो बैग होता है, उसका बोझा, जो छोटे बच्चे होते हैं उसका जो बोझ होता है, जो हम उसको एक 3 साल के बाद केजी LKG ऐसे एडमिशन देते हैं और उसको कुछ समझ में नहीं आता है उसका, फिर भी हम उसको पढ़ने के लिए भेजते हैं. उसके ऊपर एक मेरी एक छोटी सी कविता है, दफ्तराचे वजह यानी बैग का बोझा. वो बच्चा अपने माँ को समझाता है कि मुझे इतनी जल्दी वो बोझा नहीं चाहिए, जरा थोड़ा मुझे बड़ा होने दो. ऐसी रिक्वेस्ट करते हुए ये मेरी एक कविता है. इतल्यात नाका गे मम्मी फाटील दफ्तराचे वजें. इतल्यात नाका गे मम्मी फाटील दफ्तराचे वजें. व्हड जातकच आसा खूब शिकपाचें सपन म्हजें. व्हड जातकच आसा खूब शिकपाचें सपन म्हजें. इतल्यात नाका गे मम्मी फाटील दफ्तराचे वजें. तोंडांतलें लुडबें उतर सारकें तरी जावंक जाय. स्वताच्या हातीन कालसांव काडून सुसूकून पळोवंक जाय. तोंडांतलें लुडबें उतर सारकें तरी जावंक जाय. स्वताच्या हातीन कालसांव काडून सुसू करूंक कळूंक जाय. इतल्यांत नाका गे मम्मी फाटील दफ्तराचें वजें. मातसो व्हड जातकच आसा खूब शिकपाचें सपन म्हजें. तोंडाची धार वचसर बुगू म्हाका पिवूंक जाय. तुजे हातचें जेवण सोडून स्वताच्या हातीन जेवूंक जाय. तोंडाची धार वचसर बुगू म्हाका पिवूंक जाय. तुजे हातचें जेवण सोडून स्वताच्या हातीन जेवूंक जाय. इतल्यांत नाका गे मम्मी फाटील दफ्तराचें वजें. मातसो व्हड जातकच आसा खूब शिकपाचें सपन म्हजें. इतल्यांत नाका गे मम्मी फाटील दफ्तराचें वजें. वांगडच्या भुरग्या वांगडा चिखला रेब्यात लोळूंक जाय. वांगडच्या भुरग्या वांगडा चिखला रेब्यात लोळूंक जाय. आपालिपाचो खेळ खेळटना मातयेचो वास कळूंक जाय. वांगडच्या भुरग्या वांगडा चिखला रेब्यात लोळूंक जाय. आपालिपाचो खेळ खेळटना मातयेचो वास कळूंक जाय. इतल्यात नाका गे मम्मी फाटील दफ्तराचें वजें. मातसो व्हड जातकच आसा खूब शिकपाचें सपन म्हजें. इतल्यात नाका गे मम्मी फाटील दफ्तराचें वजें. आजयेचे मांडयेर बसून पयलींच्यो काणयो आयकूंक जाय. आजयेचे मांडयेर बसून पयलींच्यो काणयो आयकूंक जाय. दायज आमचे रातचे खातीर लोकगितां शिकूंक जाय. दायज आमचे रातचे खातीर लोकगितां शिकूंक जाय. इतल्यांत नाका गे मम्मी फाटील दफ्तराचें वजें. मातसो व्हड जातकच आसा खूब शिकपाचें सपन म्हजें. इतल्यांत नाका गे मम्मी फाटील दफ्तराचें वजें. मस्तेपणां सुबेजपणां करून भुरगेपण म्हाका जिवूंक जाय.
मस्तेपणा सुबेजपणा करून भुरगेपण म्हाका जीवक जाय, जाणटेपण म्हाका येतकच ह्याच यादीने न्हावूक जाय, जाणटेपण म्हाका येतकच ह्याच यादीने न्हावूक जाय. इतल्यात नाका गे मम्मी फाटील दप्तराचे वजें, मातसो व्हड जातकच आसा खूब शिकपाचें सपन म्हजें. इतल्यात नाका गे मम्मी फाटील दप्तराचे वजें, इतल्यात नाका गे मम्मी फाटील दप्तराचे वजें. और मेरी जो तीसरी कविता है वो फेसबुक के पीछे, यानी फेसबुक का पागलपन. ज्यादातर हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो फेसबुक के कैसे यूज करते हैं हमको सबको पता है. उसी के बारे में एक मेरी कविता है जो हमारा लोकगीत है, फोक सॉन्ग, उसके आधार पर लिखा है और उसकी जो रिदम है, ट्यून है, वो लेकर मैं सुनाने जा रहा हूँ, यानी गाने जा रहा हूँ. सबने आपको अगर गोवा का धालो जो है, धालो गीत मालूम है आपको, अगर तो आपको याद आएगा रिदम. फेसबुकचे पिशे. नव नव मोबाईल घेतलं, फेसबुक ओपन केला गे, फेसबुक ओपन केला गे, केलो जाल्यार बरो जालो, फेसबुकचे पिशे आमकां लागला गे, फेसबुकचे पिशे आमकां लागला गे. दिस म्हणिना रात म्हणिना सदांच ऑनलाईन आमी आसता गे, सदांच ऑनलाईन आमी आसता गे. पिकासाव व्हडलें जाता जेन्ना नेट पॅक सोंपता गे, जेन्ना नेट पॅक नासता गे. बरी कोणी दिसता जाल्यार फ्रेंड रिक्वेस्ट तांकां धाडटा गे, फ्रेंड रिक्वेस्ट तांकां धाडटा गे. हाय हॅलो जुलय खाल्लय, नाका ती चॅटिंग जाता गे, नाका ती चॅटिंग जाता गे. फ्रेंडशिप करता नंबर मागता, दिना जाल्यार फाटीक लागता गे, दिना जाल्यार फाटीक लागता गे. टाइमपास म्हणून करता चॅटिंग, कळना केन्ना जाता सेटिंग गे, कळना केन्ना जाता सेटिंग गे. स्कुला कॉलेजीक येता वयता, दोळ्या मुखार फक्त फेसबुक गे, दोळ्या मुखार फक्त फेसबुक गे. अभ्यासान मन कशें लागतलें, उगडून पळयना केन्ना नोटबुक गे, उगडून पळयना केन्ना नोटबुक गे. वळख पाळख नासतना फेसबुकार कितले जाता आमचे वांगडी गे, कितले जाता आमचे वांगडी गे. स्टेटस वाचल्या उपरांत कळटा कोणाच्यो कितें चल्ल्या भानगडी गे, कोणाच्यो कितें चल्ल्या भानगडी गे. नाका नाका तशे पोज घेवन फोटो अपलोड करता गे, फोटो अपलोड करता गे. मनान उमेद भरलेली आसता, कितले लायक कमेंट्स आयल्या गे, आपल्या कितले लायक कमेंट्स आयल्या गे. मातूय विचार करना आमी कितलो टाइम वयता फुकट गे, कितलो टाइम वयता फुकट गे. येयल्या दिसा नेट पॅक घालून पैशाचो जाता इबाड गे, पैशाचो जाता इबाड गे. सोडटलो म्हटल्यार सोडून दी, फेसबुकान घुसला मन गे. इतली गुल्ल रावता आमी, दुसरें कसलें नसता भान गे, दुसरें कसलें नसता भान गे. काय बरें आसलें जालें हें कशें, फेसबुकचें लागलें आमकां पिशें गे, फेसबुकचें लागलें आमकां पिशें गे. ये जो कविता है थोड़े थोड़े लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि जो इंग्लिश जो वो शब्द है वो मैंने वैसे के वैसे रखा है और पूरे वो फेसबुक का है. मेरी जो अगली कविता है वो भी हमारे एक फोक सॉन्ग है, लोकगीत. चतुर्थी के दिन जो फुगड़ी रहती है, वो फुगड़ी की जो ट्यून है वही लेकर मैं गाने जा रहा हूँ. इस कविता में एक माँ अपने बेटी को समझाते हुए कि कोरोना की महामारी चल रही है, तुम अपने घर पर ही रहना, हमारे घर मत आना, जैसे भी रहना, जैसे भी हो खुश सुरक्षित रहना, और तुम्हारे जो परिवार है उनका भी ख्याल रखना. ऐसा इस कविता में मैंने लिखा है.
आपको सुनाने जा रहा हूँ। कोरोना पावलो दारा धुये सुशागात, रावगे घरात धुये सुशागात, रावगे घरात सुशागात, रावगे धुये चिंता करू नका, मायेराची चिंता करू नका, मायेराची चौथीच्या सणाक धुये येऊ नका, मायेरा धुये येऊ नका, मायेरा देव बापाचो आशीर्वाद धुये मेळटलो, सासरा तुका मेळटलो, सासरा कोरोना पावलो दारा धुये सुशागात, रावगे घरात धुये सुशागात, रावगे घरात खबरी तुझे योग मेळाना धुये यादीचो, फुटला हुवार धुये यादीचो, फुटला हुवार शिरवाणान पुष्पाचे धुये उरले, दोनाय तार तुझे उरले, दोनाय तार चौथीचे वजे धाडून तुका दिल्या बगर, जीवाक ना थार तुका दिल्या बगर, कोरोना पावलो दारा धुये सुशागात, रावगे घरात धुये सुशागात, रावगे घरात आई बाबा समजून धुये सेवा करगे, माय मामाची धुये सेवा करगे, माय मामाची संकष्टाच्या वेळार धुये काळजी घ्यागे, फामिलाची धुये काळजी घ्यागे, फामिलाची देव बापा घाले तलो धुये महामारिया, कोरोनाची धुये महामारिया, कोरोनाची कोरोना पावलो दारा धुये सुशागात, रावगे घरात धुये सुशागात, रावगे घरात सुशागात, रावगे घर धुये चिंता करू नका, मायेराची चिंता करू नका, मायेराची। हेलो मैडम, क्या अभी जी समय सर। है? एक आप एक और कविता सुनाना चाहेंगे? हाँ, सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज सर, प्लीज सर। आपने पिछले 2 महीने आपने सुना ही होगा कि हमारे गोवा में जो बाढ़ आई थी बारिश की वजह से, उसके जो हमारे सत्तरी में जो मैं रहता हूँ सत्तरी में, उसको बहुत ही उस बारिश का नुकसान, बारिश में नुकसान दिया है। और जो लोग रहते हैं उनको घर भी बिछड़ गया था, पूरा बह के गया था। तो इस कविताओं में मैं जो कवि है वो एक कुटिया में रहता है, और वो कुटिया में जो कवि रहता है वो बारिश से विनती करता है कि तू जैसे भी आना, तेरी हमें जरूरत है, पर इतना भी मत आना कि हमारा सब लेकर जाओ। ऐसा इस कविता में मैंने लिखने की कोशिश की है। खोपीत येऊन चल, कविता का नाम खोपीत येऊन चल, यानी कुटिया में आके चले जाना। झिरीमिरी पावलांनी तू खोपीत मजा येऊन चल, झिरीमिरी पावलांनी तू खोपीत मजा येऊन चल, भयान कट्टा दिसाली खबर म्हजी घेऊन चल, भयान कट्टा दिसाली खबर म्हजी घेऊन चल, झिरीमिरी पावलांनी तू खोपीत मजा येऊन चल। पिसावल्यावरी येता तू चडशे पीक झडयता, उरता ते आपले मानून पोटाची भूक भागयता। पिसावल्यावरी येता तू चडशे पीक झडयता, उरता ते आपले मानून पोटाची भूक भागयता। बकासुरा भशेन नाका जेव चारच गोटे खाऊन चल, बकासुरा भशेन नाका जेव चारच गोटे खाऊन चल, झिरीमिरी पावलांनी तू खोपीत मजा येऊन चल, भयान काडटा दीस हाले खबर म्हजी घेऊन चल। आकांताचे सुटला वारे झाडा पेडा हलयता, आकांताचे सुटला वारे झाडा पेडा हलयता, आसऱ्याक घातिल्ली कापेत वयर सकयल हुबयता, आसऱ्याक घातिल्ली कापेत वयर सकयल हुबयता। मेघ मल्हार नाका सायबा यमन मातसो गावन चल, मेघ मल्हार नाका सायबा यमन मातसो गावन चल, झिरीमिरी पावलांनी तू खोपीत मजा येऊन चल, भयान काडटा दीस हाले खबर म्हजी घेऊन चल। ढोल ताशे वाजयल्यावरी नेटान तू घडघडटा, पळोवन तुझे रूप काळीज रे धडधडटा,
ढोल ताशे वाजयल्यावरी नेटान तू घडघडटा पळोवन तुझे रूप काळीज रे धडधडटा रुद्र अवतार नाका घेऊ भोलेनाथ तू जाऊन चल रुद्र अवतार नाका घेऊ भोलेनाथ तू जाऊन चल झिरीमिरी पावलांनी तू कोपीत मजा येऊन चल भयान काटा दीस आले खबर म्हजी घेऊन चल सवय तुका आसा पाडी सांगून असताना येवपाची तयारी तुझी केली ना 7-8 दीस रावपाची सवय तुका आसा पाडी सांगून असताना येवपाची तयारी तुझी केली ना 7-8 दीस रावपाची येणे तुझे गरजेचेच म्हण दाराक पाय लावून चल येणे तुझे गरजेचेच म्हण दाराक पाय लावून चल झिरीमिरी पावलांनी तू खोपीत मजा येऊन चल भयान काडटा दीस आले खबर म्हजी घेऊन चल नाशाडी जाता कुळागरांची घरादारां व्हावयता नाशाडी जाता कुळागरांची घरादारां व्हावयता संसार उगड्यार ओडून उक्त्या दोळ्यांनी पळयता नाशाडी जाता कुळागरांची घरादारां व्हावयता संसार उगड्यार ओडून उक्त्या दोळ्यांनी पळयता अवसर तुजेर येयलो जाल्यार बळगे थोडे दिवन चल अवसर तुजेर येयलो जाल्यार बळगे थोडे दिवन चल झिरीमिरी पावलांनी तू कोपीत मजा येऊन चल भयान काडटा दीस आले खबर म्हजी घेऊन चल झिरीमिरी पावलांनी तू खोपीत मजा येऊन चल शुक्रिया अगर टाइम है तो मैं थैंक यू sir. मैडम आपने आज कविता रोमन्स एंड द ग्रीक्स ने कवियों को गॉड का स्टेचर दिया. रोमन्स हैव कॉल्ड पोएट्स एज प्रॉफिट्स. आज आपने सही में वही रोल किया. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सी कि कितने सेंसिटिव हैं आप एक पोएट के नाते, कितनी आप मॉडर्न सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी को आपने बाहर दर्शाया है. कहीं पर आप कह रहे हैं अबाउट, यू आर टॉकिंग अबाउट सच अ सेंसिटिव टॉपिक. एक छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ से कह रहा है कि बैग का बोझ मुझसे अब उठाया नहीं जा रहा है. एक रूरल लाइफ, हम शहरों में बड़े बड़े ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में बैठे हुए रूरल लाइफ के बारे में बात करते हैं, लेकिन जानते नहीं है कि रूरल लाइफ क्या है, गांव की जिंदगी क्या है. फिर आप नेचर को, नेचर की गुडनेस के बारे में हम जितना बात करें कम है, लेकिन सर द वे यू हैव टॉक्ड, प्लीडिंग विद रेन्स के आना बहुत जरूरत है, लेकिन हद से ज्यादा मत आना. द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड ऑफ कोर्स जिससे हम 2 साल से पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व गुजर रहा है, कोरोना. आप इन सब टॉपिक्स को लेके, नाउ आई नो कि उस YouTube चैनल पे उस जेंटलमैन ने क्यों ऐसा लिखा था that you are the finest, one of the finest poets of Goa. Now I can understand, because आपकी जो विषय हैं सर, आपके जो आपने जो फिशरमैन के वो एक ट्यून में जो पूरा एक अपनी काव्य रचना सुनाई, इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव. हम चाहेंगे कि कोरोना काल जल्दी ही खत्म हो जाए और वर्चुअल की जगह आपको फिजिकली हम एलडी आर्ट्स अहमदाबाद में बुला सकें. Thank you very much for having come. It gladdens, and I'm sure everyone here present will agree with me, that it gladdens our heart to see that such young geniuses, young poetic minds are coming in India and bringing all of us together. मैंने पहले भी कहा था poetry connects, and आपने जो connect हमको बिठाया, हमें भाषा, पोइट्री, म्यूजिक, ये भाषाओं में बंधी हुई चीजें नहीं है. ये चीजें ऐसी हैं कि जिसमें पंछी, नदियां, वो सब समय के परे है. तो जो आपकी खुशी एज अ क्रिएटर, पोइट्री पढ़ते हुए भी जो आपकी खुशी मैं देख सकती थी, दैट इज आवर जॉय ऑफ वॉचिंग यू रिसाइट. थैंक यू वेरी मच महादेव गांवकर सर. धन्यवाद मैडम, और सब आयोजकों का धन्यवाद, क्योंकि मुझे इस इतने बड़े मंच पर मेरी कविताएं जो चौथी से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ, वो सादर करने के लिए जो मौका दिया, इसलिए सबका धन्यवाद. वैसे हमारे गजेंद्र पांडा सर, उनको भी धन्यवाद, और सभी कविताओं को शुभकामनाएं अपनी कविता सादर करने. अगर आपने मैडम जो कहा कि अगर मौका मिले तो हम गुजरात में, अगर ऐसा मौका मिले तो पहले से धन्यवाद बोलता हूँ. शुक्रिया. हमारा, इट विल बी आवर ऑनर सर, इट विल बी आवर प्रिविलेज टू वेलकम यू. ऐसे यंग माइंड्स, इतने टैलेंटेड सेंसिटिव माइंड्स को इनकलकेट करना, कल्चर करना, वो हमारा फर्ज है एज एकेडमिशियंस, एज पॉलिटिशियंस, एज स्कॉलर्स. थैंक यू सो मच. Taking the काव्य यज्ञ, thank you so much sir. Taking the काव्य यज्ञ, इसकी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स.
And now I am going to invite the only lady speaker for the day today. I want Sheila Jha, madam, to please put on your video and come before us. Sheila Jha, madam, के बारे में क्या बात करूं? She is such a multi-talented personality. Oslo, Norway में रहती हैं. English, Hindi, मैथिली एंड नॉर्वेजियन 4 भाषाओं में पोएट्री लिखती हैं और पढ़ती हैं. हम शायद पूरी जिंदगी निकाल देते हैं 2 भाषाओं को जानने, समझने में, पढ़ने में, but she has prowess over 4 different languages: English, Hindi, Maithili, and Norwegian. So I would love to invite Sheila Jha, madam. Please put on your video and please come in front of us. She is very much here, and I would request her to put on her video and be with us. And she is very interesting. I mean, I am amazed. Everyone present here will be equally amazed as I am. She is a graduate in biology, and then she is a graduate in Indian classical music. The wide range that you could have for the IT department at the Ampet University, Sheila madam is on Sheila's iPhone. So could you please put the spotlight on her? So she is, as I said, friends, there she is. Welcome to LD Arts, Sheila ji. आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम LD Arts में. और आपका ये जो छोटा सा आपने एक नोट भेजा, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उसका विश्लेषण एनालिसिस करने अगर बैठूंगी तो आई विल स्पेंड एन एंटायर डे सिंपली डिस्कसिंग व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट हैज बीन योर जर्नी. सो यू आर अ ग्रेजुएट इन बायोलॉजी, यू आर अ ग्रेजुएट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, आप पोइट्री लिखती हैं, आप पोइट्री गाती भी हैं. सो दैट इज समथिंग विच इज अमेजिंग. और आपके जो इंटरेस्ट हैं, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, उसमें योग, ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशन, सॉफ्ट टॉय मेकिंग. आई मीन आई वंडर एक जिंदगी में इतना सब कुछ अचीव करना इज समथिंग स्टुपेंडस. और सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरी नजर में इस काव्य यज्ञ की नजर में है, where you have recently released a music album in the Maithili language. So Norway, Oslo से आपका बहुत बहुत स्वागत है. We are privileged and honored to have you with us in this poetic journey, and welcome madam to LD Arts once again. And please आप मैथिली में अपना काव्य पठन करेंगी, आपको आमंत्रण देती हूँ. Thank you. Thank you so much. Thank you so much to all of you. I would like to thank first of all Jenny ma'am and Gajendra Panda ji and Shubha ma'am and all of the organizing team members for giving me a chance in this beautiful event Kavya Yagya. और आपने जो मेरे बारे में कहा शुभा मैम, तो I'm speechless कि आपने इतना कुछ कहा. रियली ऐसा कुछ है नहीं, बस कोशिश करती हूँ सब कुछ करने की, जितना जो कर पाती हूँ करती हूँ. तो आज जो है, आज मैं अपनी एक, चूंकि मैं मैथिल हूँ और मुझे बहुत पसंद है अपना जो मेरा जो मिथिला का कल्चर है, लैंग्वेज है एंड जो भी है, तो मैंने कोशिश की है एक छोटी सी कविता सुनाने की आप सबको, जो मैथिली में है. तो here I go. इस कविता का नाम है सौंदर्य का प्रतीक, मीन्स सिंबल ऑफ ब्यूटी जी. मिथिला नगरी, सौंदर्य का प्रतीक मिथिला नगरी, ये इसका नाम है. तो मैं सुनाने जा रही हूँ ये कविता जो मैथिली में है. सीता मैया के जन्म स्थान, राजा जनक जी के साम्राज्य, मिथिला राज्य के विवरण सुभग, वैदेही नगरी के इतिहास रमणीय, उर्वर भूमि उत्कृष्ट उपज, जौ धान गेहूं मरुआ मखाना
और कुसियार के संग, प्रकृति के सौंदर्य, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी, पश्चिम में गंडक, उत्तर में हिमालय, बागमती, लखनदेह, अमृता और किसारा, भारतवर्ष के लाज छे मिथिला के सभ्यता। झिझिया नाच और जट जटिन, मिथिला के धड़कन छे नारी शक्ति। विद्यापति जी के लावण्य काव्य संग्रह, मंडन मिश्र जी के प्रतिभा, और भारती जी के अर्थशास्त्र, पराजित भोगेलखिन आदि शंकराचार्य। अहल्या स्थान, जानकी मंदिर, चंद्रधारी संग्रहालय, कुशेश्वर स्थान, श्यामा मंदिर, राज किला छे मिथिला के शान मीन्स प्राइड। एहन सुंदर छे मिथिला धाम, नमन करे छी शत शत प्रणाम। तो थैंक्स। ये मेरी कविता थी, छोटी सी कविता थी, और इसका मतलब मेन मीनिंग जो है मैं जस्ट 2 लाइंस में आपको बताती हूँ। ये जस्ट मिथिला नगरी की खूबसूरती के बारे में, उसकी जो ग्रेटनेस है उसके बारे में जस्ट कहा गया था इसमें, कि ऐसी ऐसी जगहें, जैसे बीच में मैंने कुछ नाम लिया, कुशेश्वर स्थान, श्यामा मंदिर, जानकी मंदिर, अहल्या स्थान, चंद्रधारी संग्रहालय, ये सब कुछ जगहें हैं जो बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही वैल्यूएबल हैं हमारे लिए। तो प्लस यहाँ की, जैसा कि मैंने पहले कहा, यहाँ की भाषा और कल्चर जो है बहुत ही खूबसूरत है, और लोग भी बड़े अच्छे होते हैं आफ्टर ऑल। तो जस्ट यही मीनिंग था इसका। शुरू में इसका नाम ही ऐसा था, द सिंबल ऑफ ब्यूटी, तो इसीलिए मैंने इसका ये नाम रखा था। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसके बाद जो है, चूंकि मैं सिंगिंग करती हूँ, जैसा कि आप जानती हैं, और आपने अभी कहा भी, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो मैं आज एक मिथिला की खूबसूरती को बयान करते हुए एक छोटा सा सॉन्ग भी आप लोगों को सुनाना चाहूंगी, अगर परमिशन हो तो। बिल्कुल मैडम, इनफैक्ट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू यू। जी। तो जस्ट मैं 2-4 लाइन, एक सॉन्ग है, ये सॉन्ग भी बहुत खूबसूरत है, और ये भी मिथिला का ही वर्णन करता है। तो आई होप यू ऑल विल लाइक इट ऑल्सो। हम गर्व को ना नहीं करिए, हम गर्व को ना नहीं करिए, हम छी मिथिला धाम सा। हम गर्व को ना नहीं करिए, हम छी मिथिला धाम सा। जत शिव तत